about me, I'm Naveen Gautam and I'm working with APJ Institute of Mass Communication for last 12 years and I have experience more than 20 years. And then एक मैडम कुछ पूछ रही थी about the Audacity, and my life is all about Audacity, Premiere, After Effects, Adobe Photoshop. These all softwares. So these are, part and parcel of my life from last 25 years. So I did my, advanced diploma in, animation and graphic from, Aptech Arena. Then I went to London to study more about, graphics and animation. Then I went to Film and Television Institute of India, Pune, to learn this, art and craft of filmmaking. So the today topic is, creativity. So I have a PPT which I have just created, and I know you all are teachers, right? So you will be, dealing in stories with students, and the few examples which I will be showing you, I made, right, and few I have taken from others, but I have taken a prior permission to showcase those video in front of you. So this is, I think, I believe in more that you can't use up creativity. The more you use, the more you have, right? And there is one saying that practice makes person perfect, right? I'm saying person perfect because otherwise people say practice makes man perfect, because we have all the genders here. So practice makes person perfect. And I will skip this definition. We creativity is something which is, which comes in pieces. It's not like that. We are not here to develop, 5G or 6G, or we are here to make something machine. But we are here to produce basic ideas, small ideas which can be beneficial for students. That should be the creativity for all of us, including me, because I'm also a teacher. Right. So if I talk about storytelling, then there are four pillars and four characteristics of storytelling. One is people, second is place, then plot, and then purpose. Right. And since last 12-15 years I'm into academics. I'm into hunting of videos which I can show to students, from which they can learn more and more. And I find that this is, I think, as a great example, finding a right video for your students. I give you one example. I'm father of a son who is studying in 10th class, and he has his board exams, and when I saw him, he was not concentrating on his studies. So I asked him, Manika, why you are not concentrating on your study? So he said to me, this is just a pre-board, right? And then I will do my best when then real exam will come. So I said, oh, okay, fine. Then I was troubleshooting. I was finding the way how I can convince him that pre-boards are as important as the main boards. So I showed him a video which I wanted to show you. And I would request, few of you, if you can keep your video and audio on. So I think this will be an workshop mode. Otherwise ऐसा होगा that मैं यहाँ पे सिर्फ speaker हूँ, आप ही लोग मुझे सुन रहे हो. So workshop should be, अगर आप किसी workshop में गए हो, किसी कार की workshop में या किसी मैकेनिक workshop में, तो वहाँ पे सब लोग आपस में मिलके काम करते हैं, right? कोई एक इंसान काम नहीं करता है. So the same goes with this academic workshop. अगर मैं यहाँ पे आकर speech दे के निकल जाऊँगा, तो then there will be no use and there will be no learning, right? So please interact. We encourage students to ask questions, right? And believe me, trust me, the most difficult thing in this world is प्रश्न पूछना. This is the, I think, fear number 1.1, कि प्रश्न पूछना, कि मैं कोई गलत प्रश्न ना पूछ लूं, मैं कुछ stupid question ना पूछ लूं, मैं कुछ ऐसा ना पूछ दूं कि बाकी participants मेरे बारे में बाद में gossip करें. But then you can think that at least you are asking, and there is no stupid question. Question is a question. So I wanted to show you the video which I showed to my son. And then I will ask you why I showed this video to my son. I went to YouTube. YouTube is, I think, is the best source for videos. We all know that, right? And I know Monica ma'am ने मुझे बताया that you have learned so many things on video resources. तो आपको शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा. But why I mentioned that we have to find a right video, right? So I find this for him, who's studying in 10th class. I showed him this. He's Usain Bolt. Usain Bolt is very popular athlete, right?
He won so many gold medal in athletes. So I will show this. He's running for 100 meter in Beijing Olympic 2008. He ran for 9.68. 68 is nanosecond, right? 9.68 second, right? So 9.68 second में he won a gold medal for his country and for himself. Just in 9.68 second. And we all know how important is gold medal. आपको याद होगा नीरज चोपड़ा ने जीता था सिंगल गोल्ड मेडल, राइट? एंड वी स्टिल नो हिम, राइट? और हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे उसने ऐसा थ्रो फेंका था कि यार वो उसने गोल्ड दिलवा दिया, राइट? सो मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, इट्स लॉन्ग वीडियो. So, and now he ran for 200 meter and in 19.31 second, he won his second gold medal, right? So, two gold medal in around about 28 second. हम 10 में उसको 9 point जितना भी था उसको हम 10 सेकंड ले लेते हैं, इसको हम 20 सेकंड ले लेते हैं, तो 30 seconds में he won two gold medal. It's a relay race. Relay race में चार लोग दौड़ते हैं. They keep baton in their hand and they after every 100 meter they pass the baton to the another athlete, right? यहाँ पे भी आई थिंक ही रैन फॉर अबाउट 9 seconds and he won third medal, right? मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा. And now I will ask you guys why I showed this video to my son. This is the live assignment. Any guess? Actually, he improved in every run. I mean, every event. He improved his time. Absolutely, he improved in every run, right? He improved his time, right? So, any more guesses? You are absolutely right, We sir. only see what, sir, we only see what when somebody wins, but what goes behind that winning, that is what is required for a student to learn. Absolutely, He's a Urvi. good lesson on perseverance, I think. Everybody is The way not he- Usain Bolt, sir. We I- need some preparation. But he's quite motivating. He can inspire to hold on till the end. Actually, Urvi, Everybody is not sir Usain Bolt, sir. We I need preparation to be like that. it's not Saurabh sir that everybody is like Usain Bolt. I was not saying my son to be like Usain Bolt, right? मैंने तो कभी नहीं बोला तुमको Usain Bolt बनना. But why I showed this video to him, I just wanted to prove what Urvi ma'am has just mentioned. That see, he ran for only 30 seconds. You are seeing only 30 seconds. But वो अपनी पूरी जिंदगी दौड़ा होगा. ये सोच के कि ये तो प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा आराम से दौड़ता हूं.
right? He must have ran with the same intensity in his practice when he's running in that, Olympic court. So this that the reason I showed you this video. See, there are hundreds of video available. There is lots of penetration of. Excuse me. Another thing is that on his first run, I mean, that was the 100-meter run, he was a bit casual. If you watch it properly, at the end of his last 50 meters, he was staring at his co-athlete. But second and third one, he was not staring at them. He was running straight. Yeah, Biswaroop sir, I think you are a very good student of film appreciation, right? When we do this film appreciation programs, right, then we see everything very carefully, the art, the set, the lighting, the editing, the camera, everything, right? Though you have your observation. This is the good thing about videos, right? This is the good thing about visuals, that we can interpret according to our eyes, according to our vision. So this is your interpretation, right? But the reason I showed you this video, which I've already mentioned, that if you are preparing for anything, then you have to show the same intensity with which you will show in the real court, in the real field, right? So the whole purpose of showing this video, that we should find the right video for students so that they can take the message. Right, and then there is one more, option thing which I have mentioned in this, that we finding a meaningful and appropriate video, right? So I was part of one production that was with UNICEF, right? And I know you must be knowing one film actress, Nandita Das, right? So she was producing that program, that program which she got from UNICEF, and we got the topic of education, that you have to make 4 public service advertisement on education. And what is creativity? The creativity is that we have to then find a topic which can depict education in 90 seconds, because we have to deliver the message in 90 seconds. If because I'm from media, so I know the rules and regulation. If you are making public service advertisement for television, then this should be the duration. If you're making radio spot, then this should be a duration. But digital has changed the trend, right? Digital has changed the trend now. If you're making for digital, then there is no foundation of duration. But of course, in television we have this foundation of duration. Education, if I conceive a film, if I conceive a video, so education is a very big premise, huge. How can I show education in 90 seconds? It's impossible, right? So when we make videos, when we make films, so we keep a premise in mind, राइट वी ऑल वॉच फिल्म्स आई होप यू ऑल वॉच फिल्म्स आप लोगों ने फिल्म मदर इंडिया देखी होगी आपने शोले देखी होगी राइट सो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट रमेश सिप्पी सर सो आई आस्क हिम सर इफ यू कैन डिस्क्राइब शोले इन वन सेंटेंस हाउ यू विल डू दैट तो ही सेड set the thief to catch the thief set the thief to catch the thief was the premise of शोले कि चोर को पकड़ने के लिए चोर लगा दो right and then when I was studying then we met many filmmakers so there is one term called trope or metaphor, you can say metaphor, right? So if you have seen the film Mother India, which was I think one of the best Hindi film of our industry, so Mother India का जो metaphor था, trope था, वो था बैंगल, माँ के कंगन, वो लाला कंगन ले लेता है, बेटा कंगन चुराने के लिए डाकू बन जाता है, right? So similarly when we got this topic of education, and I hope आपको भी आगे चल के कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के मिलेंगे जहां पर आपको टॉपिक दिया जाएगा बट आपको फिर उस टॉपिक से प्रीमाइस निकालना है. ठीक है, अगर मुझे एजुकेशन पे मिला है तो एजुकेशन इज ह्यूज, अब मैं एजुकेशन में करूं क्या, व्हाट शुड आई डू? सो वी सेट फॉर अ डेज आई एम सॉल्विंग डेज नॉट आवर्स, राइट? वी सेट फॉर आई थिंक अ वीक टाइम. फिर हमको लगा कि वी शुड मेक समथिंग ऑन ड्रॉप आउट्स बिकॉज नो बडी इज टॉकिंग अबाउट ड्रॉप आउट्स. एवरीबडी टॉक अबाउट समाज, सोशल, स्कूल, गवर्नमेंट्स, टीचर्स, राइट?
But nobody talk about dropouts. Nobody talk about how we can bring in creativity in our education, so that जो बच्चे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से पढ़ने का के लिए माँ बाप भेजते हैं, वो स्कूल में जाके उनका मन लगे, है ना? सो हमने बोला ठीक है, एजुकेशन पे हमें फिल्म बनानी है, बट एजुकेशन इज ह्यूज, तो वी सॉर्टेड द प्रीमाइज, देन द प्रीमाइज वी रीच टू कि दैट विल मेक समथिंग ऑन ड्रॉप आउट, एंड टू वैलिडेट माई टॉक आई एम शोइंग दैट फिल्म टू यू. My screen is visible. Thank you. छोटो स्कूल जाता था, क्यों छोड़ा? मन नहीं लगता था. So this film we made on dropouts, and then when we conceive idea, when we go for shooting, right? Everything is planned. This is a very planned exercise. We can't go unplanned while we are shooting, even if we are shooting video for students. So everything is planned. So अभी discussed too much about this कि ठीक है dropouts पे बना रहे हैं, but one visual, there should be a visual which उसका recall value बहुत होना चाहिए, right? And then somebody says कि वो दीवार पे कुछ लिखता है या वो कार की नंबर प्लेट पे कुछ लिखता है. तो we have another version that some boy is writing something on the car plate, but then we decided that ठीक है, we'll take a halwai shop, but this halwai shop, it's very common setting, right? So what should be the the creative angle of the story, that the boy is making alphabet from the jalebi batter. That one visual will have the recall value, right? When we make these small films, right, so we don't expect that people will remember the entire film, right? So when I studied films, right, so मुझे बोला गया कि आपने क्या बनाया है, वो वही है जो इंसान जब थिएटर से बाहर निकलता है ना, जो उसको याद रहता है, वो बनाया है आपने. दैट्स इट. चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो एक शॉट हो, तो वो बनाया है आपने. So I'm sure that if you ever think of anything on education, on dropouts, then this visual will be recall value for all of you, that the boy is making alphabet from the jalebi batter. It's a very powerful visual. By the way, sorry to say this, I'm appreciating films on my own. I hope you are also liking those stuff which I'm showing you. Right, this is all our outstanding and very very creative work, right? And trust me, as I mentioned you, this is a very planned exercise. We can't go unplanned. You guys will be making films, right, video projects, so plan everything on paper. Pen down each and every detail. It's very important. Right, if at all required, pen down your entire script, what you will say in front of the camera. There are facilities these days, right? There are facilities that you can keep your script in front of your camera, and then you can say whatever you wanted to say, है ना? So to make sure that when you are going for filmmaking, for video making video projects, that you have to pen down everything. It's a very planned exercise. If at all you are making a bigger duration video projects, then segmentize. Make segment wise: segment 1, segment 2, segment 3, segment 4.
right? And once you are done with your shooting, then you have to make sure that you are making a log sheet of your shoot. Log sheet of a shoot, why I'm saying this, because uh, earlier when you used to shoot on tape, right, तो we keep the ratio, we used to keep the ratio 4:1. अगर हमारा 40 मिनट का 10 मिनट का फिल्म है तो we can shoot for 40 minutes, right? But for now, because we all have mobile phones in our hand, and then though all the mobile phones have a tremendous amount of storage, so we keep going, we keep shooting and shooting. That thing will be hurt us when we will doing the editing, right? So इसलिए pen down everything, right? Segment wise, segment 1, segment 2, segment 3, segment आना प्रथम पर है इधर। हो गई हो गया खाना खत्म हो गया इधर ठीक। आना। This is the good thing about online sessions. If somebody want break, there are people those who are willing to give you break by doing this. Great. So now I will show you one more example of creativity. Why I'm saying creativity, because we got a program. We got a challenge by the Vanita. Vanita, I don't know how many of you know Vanita. Vanita is a magazine. It's a woman's magazine, right? हिंदी की मैगजीन है, आपने नाम सुना होगा, ग्रह शोभा होती थी, सरिता होती थी, ऐसे एक वनीता मैगजीन है. एंड वनीता, दे वांटेड टू कम टू डिजिटल स्पेस. So they gave us the challenge that how you will bring us on digital. Up, Vanita magazine for women, they wanted to consume digital space and they were seeking the ideas, right? And we then presented one idea which was approved straight away. So what we did, while we are making videos, so sometimes we should keep small things in mind, right? Some games when we are taking sensitive topics, right? So the Vanita is women's magazine, and we thought that we should make something on child abuse, because this is one issue, problem which is omnipresent and nobody talk about it. Even those who are suffering, those who are the stakeholders, nobody talk about it. So we thought we should bring in the domestic child abuse in that. But then how we'll do that? कैसे करेंगे? So we used a game called Damsharaz. आपने सबने खेला होगा गेम Damsharaz. So we used Damsharaz, and I will show you how we used Damsharaz in child abuse. How many words? 3 words. 4. 4, okay. Hindi, English? Hindi, okay. Sugar. Very good. First word. Papa. Papa, baby. Baby. पापा से छोटा. पापा से पापा. छोटा. Raju Chacha. चाची 420. Okay. और चाचा भतीजा. Chacha Patija. No, first up. Chacha. चाचा, okay. First word, चाचा. Chacha. Okay. Okay. Second word. Mine. Hindi. Hindi. Papa ka. Me. तेरा. तेरे मेरे सपने. मेरे. Mere. Chacha. Mere. Third word. Okay. T-shirt. Jeans. Shirt. No. कपड़े? Right? कपड़े. Okay. चाचा मेरे कपड़े. ये ऐसी तो कोई फिल्म नहीं है. बच्चों की खामोशी बहुत कुछ बोलती है. उन्हें ध्यान से सुनिए. कहीं कोई अपना ही उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा. चुप ना रहें. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से लड़ें. So this is how we bring in Vanita on digital space, by producing this, one public service advertisement on child abuse, and we use the game Damsharaz to convey the very sensitive message of child abuse. I think some topics are very difficult to portray on screen, right? Child abuse, rape, right? So they are very difficult, and then they're very sensitive topic. Then how to deal with those topics? It's I think something you should think in a general way, Sir, right?
Yeah. May I request you to be please bilingual? Use a little bit of Hindi also. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, श्योर श्योर। Thank you. आगे से आई विल बी बाइलिंगुअल। Okay, then I will show you one more video, which is not a film actually, but which but teaches us lot of lesson, right? It's a very creative video. अगर आप उसको समझ लो तो, right? If you can understand this, right? I want मेरे को इसमें ना discussion चाहिए that we should talk about this video, right? So it's just a clip. It's just a clip shot by a trick, right? But it teaches us so many things. Come on then. Oh, and by the way, Bruce liked the idea of being autistic. From where now? It was not even a film, it was just a clip, it's just a video, right? Which we shot with a trick. एक चींटी है, right? और उसको घेर लेते हैं हम। सो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं इस वीडियो से? या प्लीज 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 अतलका मैम, निधि मैम प्लीज, and thank you so much for keeping a video on. Yeah, unmute yourself please. Good afternoon, sir. Pursue your goals in spite of all your obstacles. बिल्कुल, thank you so much sir, thank you so much. My pleasure, sir. Yes, sir, I had seen that clip earlier also. And that insect is repelled because of the smell of the ink. And as soon as that smell reduces or vanishes, then the insect crosses it. But until it smells it, it doesn't cross. So that's how it is repelled by using that. But if I tell you, if I ask you to what learning you... Actually, sir, I think that there are obstacles. Actually, sir, can you listen to me? Yeah, I'm listening. Yeah. Yeah. Actually, there are obstacles, but they are not as great as we think they are. There are other ways to get rid of those obstacles, I think. Absolutely, sir. Absolutely. Bang on. Thank you. Thank you, sir. So there is one more hand raised, Atma Prakash, sir. Want to say something? Sir, mine was the first response, sir. Pursue your goals in spite of all the obstacles. Okay. Okay. I think we are getting some messages as well, right? So किसको रोकने और किसको रुकने की एक लिमिट होती है, पर अगर हमने ठान लिया जाए तो कोई रुक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला जितेंद्र सर आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आई थिंक इस पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। दिस इज अ वेरी ओपन एंडिंग वीडियो, राइट? सो सर जी, सो कोई भी जो है पर्सन है वो या जो भी हो, एक वर्तुल में बंधना नहीं चाहता, वो फ्री होना चाहता है, आकाश में उड़ना चाहता है। आकाश में उड़ना चाहता है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। The obstacles are the stepping stone of success, I think, sir. बिल्कुल सर। Yeah. थैंक यू सर। अब आप लोग देखिए कि ये है खूबसूरती एक वीडियो क्लिप की, जो फिल्म भी नहीं है, जस्ट अ वीडियो क्लिप जो किसी ने घर में बैठे बैठे भी बना ली। आप भी बना सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। बट वी कैन गेट लर्निंग। Video and visual is a very powerful medium. I think this is why the entire CIIT wanted to bring in skills in you of video projects and audio video projects.
बिकॉज देर इज अ सेइंग, पता नहीं आप क्योंकि इंडिया में सिनेमा लेट आया इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था, हिस्टोरियन का, कि अगर सिनेमा जल्दी आ जाता तो हो सकता है इंडिया को सिनेमा के थ्रू जल्दी आज़ादी मिल जाती थी। वाई एम सेइंग, दो वी से दैट वाल 100 ईयर हमने सेलिब्रेट करें, राइट, और वो 100 ईयर हम इसलिए, कुछ फिल्म मेकर वो 100 ईयर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो पहले जब हम फिल्म बनाते थे, हमने कभी, बिकॉज हम डरते थे, हमारे फिल्म मेकर्स डरते थे, वी नेवर मेक फिल्म्स ऑन फ्रीडम, ऑन स्ट्रगल, ऑन पॉलिटिक्स, वी ओनली मेक फिल्म्स ऑन रिलीजन, धार्मिक टॉपिक्स पे हम लोग फिल्म बनाते थे। और वो उससे लोगों को शांति तो मिलती थी, भगवान को पर्दे पे देख लिया, बट वो जो पैशन है देश को आजाद कराने का नहीं मिलता। तो फिल्म इज सो पावरफुल, राइट। एंड इंडिया में जो फिल्म जो पॉपुलर हुई वो बिकॉज ऑफ, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट महात्मा गांधी was not favor of cinema, then Jawaharlal Nehru was not favor of cinema, but Indira Gandhi was. So she made sure that we should have our first international film festival, which I think apparently happened in 1951. The Satyajit Ray, जिनका नाम हम सबने शायद सुना होगा, he was there, he watched Bicycle Thieves, he watched films by Michael Hitchcock और बड़े सारे तारकोस्की की फिल्म देखी। देन ही डिसाइडेड दैट वी शुड आल्सो मेक सिमिलर सिनेमा। सो फिल्म एंड विजुअल इज अ वेरी वेरी पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आशीष सर, आपका हैंड रेज है, आपका मंजिल आसान है यदि रुके ना सतत गति चलती रहे। बिल्कुल ठीक कहा मंजूषा आपने, यदि किसी को अधिक देर तक नहीं रोक सकती। यस सर, अभी जो आपने वीडियो दिखाया, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, कि जैसे लाइफ में क्या होता है कि अदर्स आर क्रिएटिंग अ हर्डल फॉर अस। बहुत सारे हमारी लाइफ में रुकावटें आती हैं, और बहुत समय ऐसे हम लोगों को लगता है कि अगर मतलब हम उससे डरते भी हैं, उसको मान भी लेते हैं, बट एट द टाइम ये चीज होता है कि जब हम अंदर से अपनी एनर्जी को स्टोर करके और पूरा ये करते हैं कि अगर हमें इसको ओवरकम करना है, सो वी कैन ओवरकम इट। एब्सोल्युटली दिस सर, इज एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली आशीष सर, बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया। See, this is the power of visual medium, right? आपको मैंने एक रैंडम क्लिप दिखाई, and you are all participating. I am getting lot of messages as well. जब भी हम प्रॉब्लम में आए तो उससे घबराए नहीं, समस्या से बाहर आने के लिए रास्ते खोजने चाहिए। दीपा मैडम लिखती हैं, ठीक है। अभी अभी नाउ आई एम जंपिंग टू, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस, एंड थैंक यू सो मच, यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग विद मी। सो जैसे आज व्हेन वी स्टार्टेड, तो मैंने मोनिका मैडम को बोला था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पोस्ट लंच पढ़ना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पोस्ट लंच पढ़ाना भी। तो वी बोथ आर स्टेक, बट विल मेक श्योर दैट दिस सेशन जो है, जो हम कर रहे हैं, वो ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन रहे टिल द वेरी एंड। अभी आई वांटेड टू शो यू फिल्म विच मेड बाय माय स्टूडेंट्स, राइट, एंड दे मेड इन 2019, एंड ट्रस्ट मी, हमने इस फिल्म को जितने भी फिल्म फेस्टिवल में अभी तक भेजा है, सारे फिल्म फेस्टिवल में इसको प्राइज मिला है, राइट। इट्स एन अवार्ड विनिंग फिल्म, एंड और टास्क था दैट विल मेक समथिंग ऑन वाटर, हाउ वी कैन सेव वाटर। अब मैंने बोला था प्रेमाइज, वेन एवर वी थिंक ऑफ वीडियो, वेन एवर वी थिंक ऑफ फिल्म, देन वी शुड प्रिपेयर अ प्रेमाइज, भाई ये प्रेमाइज है, इसमें रह के फिल्म बनानी है, राइट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दैट टॉपिक इज सो लार्ज इन इटसेल्फ, कि वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए वो प्रेमाइज भी नहीं सेट किया जा सकता, है ना। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों को, व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज बेसिकली फाइंडिंग वेज, फाइंडिंग आइडियाज, है ना। कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आप, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, ठीक है। अभी हमको था कि यार कैसा एक विजुअल इस फिल्म में होना चाहिए कि इस फिल्म का रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए। इट्स मैटर ऑफ जस्ट अ विजुअल, एक विजुअल, जस्ट वन शॉट, राइट। सो हमने क्या किया, मैं दिखाता हूं आपको।
राइट, बिकॉज वी ऑल नो दैट पानी बचाने पे तो इतनी दुनिया की फिल्में बन चुकी हैं। एक फिल्म तो मैंने देखी कि टैप चला हुआ है, बंदर आके उसे बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि जानवर भी भाई वो भी अभी आजकल दे नो दैट वाटर इज प्रीशियस, तो उसको सेव कर लो। तो अब इतनी सारी फिल्में जब किसी एक टॉपिक पे बन चुकी है, देन हाउ यू विल ब्रिंग इन क्रिएटिविटी, हाउ यू विल ब्रिंग इन समथिंग जो बहुत अलग लगे, जो बिल्कुल डिफरेंट लगे। तो वी जस्ट थॉट ऑफ वन विजुअल। हमको लगा एक इमेज ऐसा होना चाहिए जो जो जबरदस्त हो, जो देख के लगे यार ये क्या है, अ गर्ल, अ कॉर्पोरेट गर्ल विद अ मटका। सूटेड बूटेड गर्ल विद अ मटका, राइट। अदरवाइज हम क्या देखते हैं, अगर अब मैं स्टीरियोटाइप्स की बात करूं, थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू सो मच, आप तारीफ कर रहे हैं हमारी फिल्म की। ठीक है, तो मैं जब अगर बिकॉज क्या होता है फिल्म मेकिंग में, इट्स लाइक स्टीरियोटाइप्स। अगर मुझे कुछ दिखाना है पानी, मटका, तो देन देयर शुड बी अ विलेज लेडी हु इज हैविंग मटका ऑन हर हेड, है ना, एक गांव की लड़की होगी जिसके सर के ऊपर मटका होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। तो वी वांटेड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, तो हमने एक विजुअल विजुलाइज करा कि कॉर्पोरेट गर्ल विद अ मटका, दैट्स इट। उसके बाद सारी फिल्म आगे पीछे बन गई। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक इमेज में भी सोचना पड़ता है, दो यू आर मेकिंग अ वीडियो फिल्म, विजुअल फिल्म, राइट, बट एक इमेज अगर आपको मिल जाए ना, तो दैट इमेज कैन बेसिकली, पहले हमको लगा कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही है, बट आगे बिल्कुल श्रद्धा, आपने बिल्कुल ठीक करा, यही आइडिया भी यही था। आइडिया यही था कि हम दिखाएंगे लड़की है, वो उठती है, शी इज गेटिंग रेडी, अपना कोट वोट सूट वूट पहन रही है और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही है, बट एट द एंड विल शो दैट शी विल कैरी मटका विद हर। तो थैंक मोनिका मैम, वी हैव टाइम टिल 3, राइट? ओके। So you were mentioning about the tools. I think you want to maybe. I'm coming on that. I will show them one more example. Then I will speak about those tools which they can use free of cost. And for those tools, they don't even need their laptops. They can work with their mobiles as well. Right? By the way, मैं बता दूं, जो film which you have just seen, वो मोबाइल से ही बनी थी। It's a pure mobile film. iPhone 10, राइट, और एडिट भी हुआ, एक फ्री सॉफ्टवेयर है इन शॉर्ट्स, बट दे व्हाट दे डिड, दे रिमूव द वाटर मार्क विच द फ्री सॉफ्टवेयर्स लीव। हाँ, वो वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी नीड टू सेंड दोज फिल्म टू कॉम्पिटिशंस, एंड कॉम्पिटिशन डजंट एक्सेप्ट, राइट, कुछ भी वाटर मार्क किसी फिल्म में हो। तो आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, देन विल जम्प टू द madam is mentioning. So this is a Sri Lankan film. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें YouTube का हाथ है। वहां से अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो उसमें मैं कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था, मैं काम कर रहा था, या मैं बना रहा था, या मैं एडिटिंग में था, या मैं था, बट इस फिल्म में मेरा कोई हाथ नहीं। ये फिल्म आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट एंड इट्स अ श्रीलंकन फिल्म। මොකක්ද? ඉමාන්නේ මේ පොතේ තිබ්බ දෙයකට මොකක්ද ඒ තමයි කොරග ගහන මිනිස්සෙක් දැකලා තව මිනිස්සෙක් අහනවා ඇයි ඔය කොරග ගහන්නේ කියලා. එතකොට අර කොරග ගහපිය මිනිස්සයා කියනවා ඒ මගේ මේ දතේ අමාරුවකින්ද කියලා. බලලා ඉවර වෙලා මටත් දෙනවද?
මොකටද? නෑ. S2. ඔබ බලා අවසන් වී බෙහෙත් පරිත්‍යාග කරන තෙක් තව කෙනෙක් මග බලන් ඉන්නවා. So this is a Sri Lankan film, and it got viral in India. I think 5 years back, and this is still trending. If you go to film iDonation, so you will find this film, right? So अभी time बहुत कम बचा है, then we'll now shift to the PowerPoint presentation, which I think मैम मैंने बनाया तो काफी कुछ था, but अभी time नहीं है. But what I will do, I will share this PPT with you, क्योंकि किसी महानुभाव ने कहा था कि जब आप गूगल से कॉपी करते हैं तो वो प्लेजरिज्म है, ठीक है, बट जब आप 20 लोगों से कॉपी करते हैं तो वो रिसर्च है. तो मेरी पीपीटी कुछ नहीं, एक रिसर्च है. तो आई हैव कॉपीड फ्रॉम मेनी सोर्सेस एंड मेड वन पीपीटी. सारे टीचर ऐसे ही करते हैं, कोई बताता नहीं शायद. So you can put me on the mail and I'll share it with everybody around. Absolutely, I will do that. So it's a long PPT, but we will not discuss everything. If you see, मैं आपको धीरे धीरे लेके जाता हूँ. This is it's a very long PPT. आप बाद में पढ़ लेना. इसमें कुछ हर टीचर, आप लोग भी टीचर्स हैं, आप लोग भी कुछ ऐसा करते होगे कि टाइम निकल जाए. मैंने भी करा हुआ था, बट 1 घंटा ही मिला. So I thought I should come back directly to but this is very interesting, right? You should try this. This is मेरी PPT visual है ना. अभी there is a slide which says digital technology for teachers. Yes, it is visible. So we should thank to this pandemic, right? It has created a lot of resources, lot of facilities on internet for all of us, because I am dealing with cameras, I am dealing with editing, I am dealing with filmmaking. So अब मैं कैमरा कैसे सिखाऊं स्टूडेंट्स को जब तक वो मेरे पास नहीं है ना. थ्योरीज तो पढ़ा सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग Canon has started the stimulator. They have started stimulator. If you go to Canon stimulator, you will write a keyword on Google, Canon stimulator, right? तो आपको ये पूरा एक वेबसाइट मिल जाएगा जहां पर आपको रियल कैमरा सेटिंग्स मिलेंगी, जहां पर आपको बटन क्रिएट करने हैं, एक्सपोजर कैसे सेट करना है, कैसे लाइटिंग करनी है, कैसे अपर्चर सेट करना है, फोकस कैसे करना है, वो सारे टूल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल जैसे आपको कैमरे में दिखते हैं. तो दिस इज अ वंडरफुल फॉर दोज हु आर टीचिंग मास कम्युनिकेशन. और हम लोग थे तो हम लोगों को लगा ये तो कैनन ने हमको. So this is one thing, if you are into mass communication, these are all stats, right? आप बाद में भी देख सकते हैं. And you do keep changing, right? कैसे बदलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट is basically is a very dangerous medium. Though it's very useful, but it's very dangerous as well. अभी मैं यहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगा ना लाइव स्टेट्स. So मैंने अभी अपने कंप्यूटर पे दिख रहा है आपको मेरा इंटरनेट लाइव स्टेट्स, राइट? So this is what happening in 1 second on internet. If I see tweets, this is called live stats. Instagram, YouTube, Google. This is something very exciting, but if you are into digital media, if you are into social media, if you are into content creation of social media, then this is very exciting but yet dangerous as well. So now I'm jumping to these are all stats which keep changing on internet, right? So ये आप skip कर देता. I'm straight away jumping to the slide where I've mentioned few freebie for all of you. So there is a term called मोजो. आप सबने सुना होगा मोजो स्टैंड फॉर मोबाइल जर्नलिज्म, बट अभी जो है इट्स मोजो के साथ साथ ये हो गया मोफी स्टैंड फॉर मोबाइल फिल्म मेकिंग, राइट? सो दिस इज टर्म एंड दिस इज कॉइन्ड बाय सारी बातें तो अल्फ्रेड हिचकॉक या शेक्सपियर नहीं बोलेगा, तो कुछ बातें नवीन गौतम भी बोलता है. तो दिस इज माय टर्म, मैं इसको पेटेंट करवा लूंगा बहुत जल्द, विच इज कॉल्ड मोफी स्टैंड फॉर मोबाइल फिल्म मेकिंग, right? And this are the, आपको अगर ये जो दिख रहा है, right, if you can see this device, ये वाली डिवाइस मैं एनोटेट करके आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रही है तो, right? This device, right?
This is basically a lighting device which is available in I think every market. अगर आप, because I lives in Delhi, मैं किसी भी मार्केट में जाता हूँ तो वहाँ पर कॉर्नर में लगा के बैठा है 600-700 रुपए का डिवाइस होता है जिससे आपकी लाइटिंग बहुत बेटर हो जाती है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर मेकिंग फिल्म्स, राइट? कि कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, विच इज साउंड एंड लाइट एंड ऑफ कोर्स योर कंपोजिशन, हाउ यू आर सिटिंग। जैसे अभी निधि मैडम बैठी है ना, उनका वो परफेक्ट कंपोजिशन है, और अभी जो जैसे प्रियाक्षी मैडम बैठी है ना, उनका हेडरूम थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा अपना हेडरूम टाइट करना पड़ेगा, जो हेड के ऊपर स्पेस है ना उसको ठीक करना पड़ेगा, तो उनका कंपोजिशन भी यू नो जैसे हम पढ़ते हैं फिल्म मेकिंग में वैसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, राइट? सो और ये सब इक्विपमेंट बहुत सस्ते में अवेलेबल है। फोन्स आप सबके पास होंगे, स्मार्टफोन सबके पास होंगे, स्मार्टफोन में सबके पास कैमरा होता है, एंड देन यू हैव फीचर्स आल्सो वेयर यू कैन एडजस्ट योर लाइट लिटिल बिट, बट स्टिल वी हैव फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज एवरीबडी इन होम, मेरी वाइफ का अलग ऑफिस चल रहा है, मेरा ऑफिस अलग चल रहा है, बच्चे का स्कूल अलग चल रहा है, कहाँ से महल थोड़ी ना खरीदेंगे हम। तो वी फाइंड अ कॉर्नर घर में कहीं पे कि हमको मिल जाए, बट वो कॉर्नर ढूंढने के चक्कर में वी हैव टू सेक्रीफाइस बड़ी सारी चीजों के साथ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि वी डोंट हैव अ प्रॉपर बैकड्रॉप, वी डोंट हैव अ प्रॉपर लाइटिंग, राइट? तो वो अगर आपको करना हो तो इट्स वेरी वेरी चीप, आपको 600-700 रुपए का पड़ता है, बट इससे आपका लाइटिंग वाइटिंग बहुत परफेक्ट हो जाता है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा ये, राइट? फिर ये दिस इज समथिंग हिस्ट्री 1913 में कैमरा आया, उसके बाद फिर वॉकी लुकी आ गया कि हम कैमरा लेके दौड़ने लगे, न्यूज के पास आ गया, है ना? तो मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ, ये बाद में आप पढ़ लेना। फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने जिंदगी बदल दी। फिर यू कैन सी आईफोन आ गया, and then the reason behind using mobile is it's a cost factor, right? It's mobile in terms of in comparison to the cameras, it's cheap, पोर्टेबल है, सिटिंग जर्नलिज्म है, फिल्म मेकिंग भी कर सकते हो। अभी आजकल तो सबके पास 4G है, किसी के पास तो 3G है नहीं, राइट? तो ये जो है, ये दीज आर दी एप्स, राइट? जो मैम बात कर रही थी कि मुझे फटाफट इस पे कूद जाना चाहिए। दिस आर फ्यू एप्स विच यू कैन यूज फॉर योर वीडियो प्रोजेक्ट्स। iOS, एंड्रॉयड, ये बड़ी सारी ऐप है। ये पीपीटी एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप सब लोगों को दे दूंगा, सो दे आर ऑल फ्री। हाँ, दे आर ऑल फ्री, आपको किसी के लिए पैसा देना नहीं है। फोटोग्राफी, राइट? इफ यू आर नॉट अ फोटोग्राफर, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको फोटोग्राफी कोर्स करने का, उडेमी में, एन अकेडमी में जाके पैसा खर्च करने का। आप खुद फोटोग्राफर बन सकते हैं। दीज ऐप विल मेक यू अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वो आपको खुद सजेस्ट करेंगी कि आपका एक्सपोजर बोले तो जैसे अभी मेरे ऊपर कम लाइट आ रही होती तो मैं अंडर एक्सपोज होता, ज्यादा लाइट आ रही होती तो ओवर एक्सपोज होता। तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत नए होंगे, बट राइट, ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सब आपको वो सब चीजें ठीक करके देती हैं जो आपको अपनी फिल्म को खूबसूरत बनाने में विजुअली, राइट? आई एम नॉट सेइंग आइडिया तो आप ही का होगा, ठीक है? तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इवन जितनी भी मशीन्स हैं, ये आपको टेक्निकली तो हेल्प कर सकती हैं, बट आपको जो फिल्म इज गुड और बैड विजुअली वो डिसाइड कर सकती हैं, बट आपकी फिल्म कंटेंट वाइज कैसी है वो आप ही डिसाइड करोगे, है ना? तो बट यस, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। जैसे लेट्स से व्हेन वी यूज प्रोफेशनल ग्रेड कैमरास, तो वी हैव मेनी फीचर्स, राइट? हमारे पास जूम इन जूम आउट प्रोफेशनल है, हमारे पास वो अगेन लाइटिंग के कुछ पैरामीटर्स हम कैमराज में ठीक कर सकते हैं, एक्सपोजर है, अपर्चर है, देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स व्हिच यू विल नॉट बी अवेयर। तो बट ये जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हैं, दे वर्क लाइक अ प्रोफेशनल कैमरा, राइट? आप इन सब को यूज करके आपका जो मोबाइल का कैमरा है, दैट मोबाइल का कैमरा विल वर्क लाइक एज अ प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ लिंक भी दिए हैं, राइट? यहाँ पर मैंने कुछ लिंक दिए हैं, ये सब ऑनलाइन लिंक हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी पूरी फिल्म बना सकते हो, आप पूरा वीडियो बना सकते हो। मैं लॉक शीट की बात कर रहा था शुरू में कि आप जब फिल्म बनाए तो पेन डाउन कर दें, राइट? तो आपकी फिल्म को आप उसी तरीके से जब जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हो तो वो डिफरेंट टाइप होता है। जब आप उस ऐप में जाके टाइप करोगे तो फिल्म मेकिंग में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में होता है सीन 1 में क्या होगा, सीन 2 में क्या होगा, सीन 3 में क्या होगा। बट आप तो फीचर फिल्म नहीं बनाने वाले हो, आप तो वीडियो प्रोजेक्ट बनाओगे, एजुकेशनल वीडियो प्रोजेक्ट बनाओगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका अगर लेसन 1 है, ठीक है, लेसन 1 में आपके 4 मॉड्यूल हैं,
तो आपने एक मॉड्यूल के लिए स्क्रिप्ट बनाई, दूसरे मॉड्यूल के लिए स्क्रिप्ट बनाई, तीसरे मॉड्यूल के लिए स्क्रिप्ट बनाई, चौथे मॉड्यूल के लिए स्क्रिप्ट बनाई। तो ये जो ऐप है वो आपको हेल्प करेगी आपको मॉड्यूल वाइज शूट करने के लिए और एडिट करने के लिए। टाइम ज्यादा होता तो मैं आपको लाइव वहां पे ले जाकर दिखा भी सकता था, राइट? सो एंड देन वी हैव दिस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट? तो यहाँ पर आई हैव मेंशन कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेंगे। जो ल्यूमा फ्यूजन है, दिस इज iOS। iOS स्टैंड फॉर इट मींस दैट यू कैन वर्क विद ओनली एप्पल फोन्स, आईफोन्स। देन दिस किनेमास्टर, ये बहुत पॉपुलर है, आपको भी शायद पता होगा। देन दिस पावर डायरेक्टर, दिस इज एंड्रॉइड ओनली, ऑल राइट मोशन एंड्रॉइड, आई मूवी ओनली आईफोन, right? Then this is for social media. Let's say if you are very specifically making something just for social media, for Facebook, for Instagram, right? By the way, if you see the reels, आप लोग reels देखते हैं, अगर आप reels देख रहे हो तो you will find that even reels में रील्स का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, बट उसमें भी आजकल आई हैव सीन मेनी टीचर्स दोज हु आर वो छोटे छोटे 30 सेकंड में कुछ एक थ्योरी कवर कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट दे डूइंग इट। ठीक है, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, इफ आई एम गोइंग देयर, इसको अंग्रेजी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ठीक है, तो वो इस तरीके की छोटी छोटी रील्स बना के वो पढ़ा रहे हैं, विच इज अमेजिंग, विच इज कॉल्ड आइडिया, राइट? ड्यूरेशन ठीक है, रील्स बहुत कम ड्यूरेशन की होती है, बट वो आप उसमें वो मीनिंगफुल, एप्रोप्रिएट, एजुकेशनल बातें भी बोल सकते हो, राइट? तो दीज आर, ये सारी ऐप वो वाली ऐप हैं। देन आप लोग ऑडेसिटी तो यूज कर रहे हो, बाकी ये भी सब है, वॉइस रिकॉर्ड है, फेरेटी है, ऑडियो इवोल्यूशन है, राइट? एंड ट्रैक है, गूगल स्ट्रीट व्यू है अगर आपको 360 व्यू देखना है, तो एनिमेशन आपको करनी है। और बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि you don't need to be an animator like me, right? I know animation, I know graphics, I know editing, I know camera, I know the entire gimmicks of filmmaking, but इन apps के साथ आपको वो सीखने की बड़ी कोई जरूरत नहीं है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस ऐप विल हेल्प यू, ठीक है? ये फ्री ऐप है और आपको वो धीरे धीरे अपने आप गाइड करती जाएंगी, राइट? सो वर्टिकल स्टोरी टेलिंग, वर्टिकल स्टोरी टेलिंग, लेट्स से अगर आप मोबाइल को ऐसे शूट करते हो, है ना? मोबाइल से तो ऐसे ही शूट करते हैं ना हम, वेरी रेयरली वी डू दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्टोरी टेलिंग। तो अभी उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे शूट कर लो, बट आप उसको जैसे कुछ हाई एंड सॉफ्टवेयर में लेके जाओ, प्रीमियर में लेके जाओ, तो वो आपकी स्क्रीन छोटी कर देगा, फिर चारों तरफ ब्लैक आएगा, है ना? ये बहुत टेक्निकल है, आई होप आपको समझ में आ रही हो। पर वर्टिकल स्टोरी टेलिंग में जब आप एडिटिंग करोगे तो आपकी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो ऐसा ही आएगा। एंड फ्यूचर इज वर्टिकल। Probably we are talking about ideation in this free video project softwares. Probably I think after 5 years मुझे लगता है there will be workshop of vertical. It's a wonderful sound effect, जिसने भी create करा है, thank you so much. Right, so that's it, ये मैं share कर दूंगा। Then I gathered few, I don't know how much you know or don't know, मैंने कुछ free video resource भी निकाल के रखे थे। मैम, if you allow me, then I can give them demo. Sir, if it is possible, you can put the links in the PPT itself. Okay. Since we are running short of time, that's the only. I will do that. Yeah. So that will be helpful. They'll be able to access it on their own, and they will be able to spend good time also to understand all of it. Okay, ma'am. Right. So any concluding words from your side? Then. Ma'am, I think I'm speaking. मैं तो last 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो I think then concluding word should be from the participants, not from the resource person. Right. Anybody want to have anything to ask? If any questions you have or any point you want to discuss, share with us, you may either write in the chat box or raise your virtual hand so that we can allow you to unmute and speak. Anyone? There is one message from Kamla Rajpal. Excellent session, very interesting and informative session. Brian, Rituparna ma'am, please unmute yourself and say. Sir, first of all, thanks a lot. It was a very interesting session. Thank you, ma'am. Sir, one point, like the video about that ant which you had shown,
I agreed with all the perspectives, but I got a different perspective as well. Like, it can be seen as not putting too many limitations to anybody, so much so that he or she will no longer, have complete abhorrence for all limitations and all rules. So I want to say how to like guiding the viewers to our like particular. Is it necessary that this is the perspective? Like, is that easy to put that perspective, that this is the perspective that all should view it? Like, I thought it differently, or I took it a different view. Is it possible that videos have the risk of taking like giving a different or a different perspective to the viewers? Ma'am, I think very valid question, and even I am exploring the answer of this question from last 20 years, because there are art forms like painting and photography, and then filmmaking, and then dance, and then music, and then theater. They are all considered as art form, and when you deal with art forms, then people have their different perception. Because I showed one video of Usain Bolt who is running, then one of the participants said that सब तो कोई Usain Bolt जैसे नहीं होते हैं ना, but I showed that video with a very different perspective, but his perspective was this: इस हर कोई Usain Bolt नहीं बनता है, right? But yes, there are ways, right? There are ways that though on the one hand I'm saying that you please be creative when you are creating videos or making films. On one hand, there are safe filmmaking as well, right? You follow the rules, right? Don't break the rules. If A stand for apple, if anybody stand A for apple, then please keep A for apple. Don't make that A for arrogance, A for arrogance. So keep it simple. If you keep things simple, then I guess people will take you simple. That's my answer, ma'am. Otherwise, visual art form is very very exciting. It's very creative. And then आप कोई फिल्म देखते हो तो आपको लगता है अच्छी है, आपको अच्छी लगती है, दूसरे को एक ही फिल्म है. Prakash ji? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, first of all, a lot of thanks because you interspersed your talk with so many video clips, and that was really very insightful. Sir, you told that a Canon stimulator. That is a site where we can learn the gimmicks of the camera. But those people who are using Sony camera, then is there any other site similar to Canon stimulator? Sir, I think this is very good question, right? Many people ask me that Sony doesn't have this facility, right? But for me, if this is a very what I tell to others, right? See, camera is like if you know one camera how to operate, then the model and then company doesn't matter. If you know how to drive Maruti, then you can drive Desire, you can drive Ferrari, you can drive Maserati because you know driving. You getting me? If you know one, Okay, sir. if you know Sony, Great. how to use Sony, what is the use of zoom, what is the use of aperture, what is shutter speed, what is ISO, what is CCD, then कैमरा तो सब वही है. Sony भी वही बनाता है, Canon भी वही बनाता है, बस कंपनी चेंज है. So if you know one camera, then you will not take much time to know other cameras. So Excuse me, sir. So the answer you gave, what I drew is, I think you said we should keep it simple. I think the target audience making the video as per the level of thinking of the target audience, that is what you meant. Like, it absolutely, will help to shape the perspective. Absolutely, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sanovar. Thank you, Nidhi. Thank you, Poonam. Thank you, Vivek. Sorry, but time is very less. I could cover more. किसी के पास और कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप. Okay, sorry, I had a call from office itself. No. So, thank you very much for the interactive session, I'll say, and a lot of videos which you've shown to us. They were actually very creative, and I think Ma'am Rituparna ma'am, with the question which she raised, creativity, basically, it is up to us how we are planning our film, how we are planning our video.
that we are keeping the end such that we are thinking about it a little more. So it is up to us to close the story there only, then and there, with our inputs, or we keep the story open for the viewer to think or to maybe enhance it further. So it is up to us how we plan our program, how we plan our video or our resource, whichever we are making for educational purposes or even for other purposes which we want to create. So thank you very much, Professor Gautam, for your interactive session, for your time, sparing this long time to speak with us, to interact with our participants. I thank you on behalf of CIT, my personal behalf, and on behalf of all the participants. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye bye, ma'am. Bye bye. Bye, sir. So now after this,